DNA, yes. The DNA is made up of sequence of nucleotides. The nucleotide is nothing but phosphorylated sugar. Nucleoside. nucleoside. The phosphorylated nucleoside is called nucleotide, right? Yes, ma'am. Yes. So students, first of all, let us talk about nucleosides, different types of nucleosides. Nucleoside means what? Pentose sugar Yes, it's sugar plus base. That is pentose sugar plus any one of the base, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So students, what is this? Pentose sugar. Sugar. Correct. When the pentose sugar, first carbon, right? You studied the first carbon of the sugar is attached to the base, right? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. If it is purine base, if it is a purine base, then the first carbon of the sugar is attached to which nitrogen? 9. Right. 9th. Very good. And if it is a pyrimidine base, then the first carbon of the sugar is attached to First. First nitrogen. first nitrogen of the base. सबको समझ में आया वो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. With which bond? The sugar and the base are bonded. With which bond? Glycoside. Glycoside. Glycosidic bond. Very good. सबको समझ में आया? Learn किया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Those who are giving answers, it means you have learned it. तो यही notes अपने खुद के बनाओ. वो जो पैराग्राफ है उसमें मेन पॉइंट जो है, sugar plus base is nucleoside. First carbon of the sugar is bonded to the sixth carbon of a pyrimidine. First carbon of the sugar is bonded to the ninth carbon of purine. ये short answers, मतलब short notes निकालो. ऐसे ही Ma'am, ये you type yesterday didn't send no. हाँ, मैंने इसलिए नहीं भेजे क्योंकि कल के लेक्चर में, मतलब लेक्चर तो बहुत बड़ा हुआ बट टॉपिक कम कवर हुआ था, तो आज मैं एक साथ भेज दूंगी. ओके? Yes. Yes, ma'am. Yes. So here first we'll see the type of nucleosides with purines. Who are the purines? Dicyclic. Adenine and guanine. Adenine, guanine. Adenine and guanine. Very good. Are they monocyclic or dicyclic? Dicyclic. Very good. How many membered they are? 9 members. Nine members. Very good. In those 9 members in the double cycle, how many carbon? 5 carbon. Five. Carbon. How many nitrogen? 4. 4 Five. nitrogen. Very good students. Very good. It is showing that you are studying. Only those who are answering. बाकी के you need to pull your socks. इतना easy नहीं है नीट की एग्जाम में टॉप आना. You have to do studies daily. Okay. So we'll start with purine. Adenine. So the pentose sugar and the adenine is bonded with a glycosidic bond. Now we know that. Which pentose sugar it is? Ribose. Ribose. Very good. क्योंकि ये first, second, third, fourth and fifth will be here. क्योंकि यहाँ पे oxygen होता है. Okay. So second carbon if has OH means O is there, then it is ribose sugar, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ribose sugar when is bonded to the purine adenine, it forms a nucleoside adenosine. समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. When a ribose sugar is bonded to the purine guanine, then it is the nucleoside guanosine. When the ribose sugar is bonded to the pyrimidine, चलो
बताओ पहला pyrimidine. Cytosine. Cytosine. Then it forms the nucleoside cytidine. When the ribose sugar is bonded to the pyrimidine, Thymine. what? Thymine. थाइमिन के साथ राइबोस शुगर बॉन्ड होगा क्या? क्योंकि थाइमिन किस में होता है? DNA. Uracil. एंड डीएनए में राइबोस शुगर होता है क्या? No. No, miss. तो Uracil. राइबोस प्लस थाइमिन कभी नहीं हो सकता. So is it uracil here? I can write. Yes. Yes. Yes, ma'am. So ribose plus uracil will give us uridine. तो स्टूडेंट्स जब प्यूरिन्स को हम राइबोस शुगर के साथ कंबाइन करते हैं उनका एंड सेम है, देखो सिन सिन. लेकिन जब पायरिमिडिन्स को हम शुगर के साथ कंबाइन करते हैं उनका एंड सेम है, देखो डिन डिन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू कैन रिमेंबर दिस वे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So 1, 2, 3, 4. Are these the 4 types of nucleotide of RNA? Because ribose sugars they have. Yes, ma'am. Yes. 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 So can I write here 4 types of nucleosides of RNA? Any doubt? No, ma'am. Now next. अब हमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ने हैं. तो डीएनए में राइबोस शुगर होता है कि डीऑक्सीराइबोस? Deoxyribose. Deoxyribose sugar. तो ये स्ट्रक्चर कैसे निकालूं? OH की जगह H. Yes. Should I draw H at the second carbon, right? Yes, ma'am. Yes. Yes. So it is the pentose deoxyribose sugar which is bonded to, चलो again, adenine suppose. तो इधर तो एडिनोसिन था, राइबोस शुगर के साथ था, इसलिए इधर हम इसको बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन. समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. तो आगे के नाम बता सकते हो? चलो बताओ आगे. Deoxyguanosine. Deoxyguanosine. So deoxyribose plus guanine, what it will be? Deoxyguanosine. Deoxyguanosine. Deoxyguanosine, right? 12th standard, are you there? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes. Yes, ma'am. So I hope you all are also answering. चलो next बोलो. Deoxyribose plus cytosine. Cytosine. So what is the name? Deoxycytidine. Correct. Deoxyribose cytidine. Next. Deoxyribose. Should I write uracil here? No, miss. Thymine. Thymine. No. Very good. We should write here thymine. So what it will be? देखो ये भी Deoxythymidine. Deoxythymidine. very good. दिन दिन, क्योंकि ये क्या है? Pyrimidine. 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 इसलिए ends with din. Pyrimidine. ये क्या है? Purine. So they end with in. Are you getting here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So deoxyribose plus thymine will give us deoxyribose thymidine. So are these the 4 types of nucleotide of DNA. nucleosides of DNA? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये लिखने की या स्क्रीनशॉट निकालने की जरूरत नहीं है. मैं आज जो नोट्स भेजूंगी उसमें ये प्रॉपरली ऐसे दिया है. So any doubt still here?
which are the different 8 types of nucleosides. Everyone understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now let us study the types of nucleotides. Sugar plus base is a nucleoside, and the nucleoside plus phosphate is a nucleotide, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सबसे पहला न्यूक्लियोसाइड हमने अभी पढ़ा, was that adenosine? Yes. Yes, ma'am. यहाँ पे राइबो शुगर प्लस एडेनिन है, प्लस phosphate. Is it one phosphate I have used here? Okay. So what will be the name of the nucleotide? See here. Adenosine में कौन आया? Phosphate. Yes. So we'll write it as कितना आया? One only. Yes. So we'll call it as Yes, ma'am. adenosine monophosphate. समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. AMP. Get it out. No, ma'am. No, ma'am. Or students, it is also called adenyllic acid. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second, guanosine था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me the name now. Guanosine. Guanosine monophosphate. Correct. GMP. Guanosine monophosphate. And what will be the other name? Guanylate acid. Guanylate acid. Yes, guanyllic acid. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. चलो थर्ड बताओ अब तुम. Cytidine. साइटोसिन प्लस हाँ क्या था उसका नाम? साइटिडिन. ओके गुड. साइटिडिन प्लस फॉस्फेट. व्हाट विल बी द नेम? Cytidine monophosphate. यस, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट. और Cytidinic साइटिडिक एसिड. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगला बोलो चलो. Uridine. यूरिडिन plus phosphate. What it will be? Uridine monophosphate. सबको समझ रहा है? Is there anyone who is not understanding what is going on? Please ask. Are you all understanding? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So uridine monophosphate will also be called as Uridinic acid. correct. Uridinic acid. Very good. अब अगला बताओ. ये RNA वाला हो गया न्यूक्लियोटाइड्स, राइट? Are these all RNA के न्यूक्लियोटाइड्स? Yes. Yes, ma'am. अब वही अगर हमें DNA के न्यूक्लियोटाइड्स करने तो एडेनोसिन की जगह पे क्या आएगा? Deoxyadenosine. Deoxyadenosine. तो मैं इधर ही कन्वर्ट कर देती हूँ. ओके, हियर इट विल बी डीऑक्सी एडेनोसिन फॉस्फेट. सेम हियर डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. सिर्फ इसको ये अलग ये नेम नहीं होंगे. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो इसका क्या आएगा फिर? Deoxyguanosine. Deoxyguanosine Monophosphate. plus phosphate will give us Deoxyguanosine monophosphate. deoxyguanosine monophosphate. Okay, it will give us deoxycytidine plus phosphate will give us deoxycytidine monophosphate. Will this come in DNA nucleotide? No. No, ma'am. What should be there?
Thymidine. Thymidine. Deoxythymidine phosphate, right? Yes, ma'am. सिर्फ इसके ये ब्रैकेट्स के एक्स्ट्रा नेम्स नहीं आएंगे, इसको एक एक ही नाम है. Nucleotides of RNA has two names, either adenosine monophosphate or adenylate acid, guanosine monophosphate or guanylic acid. In that way, DNA के nucleotides will have only one name. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, did you all understand nucleoside and nucleotide? Yes, ma'am. Yes. And their different types? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now students, कल हमने वाटसन एंड क्रिक ने एक्सप्लेन किया हुआ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ा डीएनए का. Yes, ma'am. Yes, miss. Just one minute, huh? Okay. So we studied Watson and Crick's double helix model of the DNA. So in that, the backbone of the DNA is formed by Sugar and phosphate. Sugar and phosphate group. very good sugar and phosphate group, in which the phosphate group is projected outward, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And they are interconnected. Is it in this way? Yes, ma'am. See students, हमने पढ़ा है phosphate, that is phosphoric acid, has 3 hydroxyl groups, right? Yes. Yes, ma'am. So out of the 3 hydroxyl group, the 2 hydroxyl groups are bonded to pentose sugar. One hydroxyl group is bonded to third carbon of the pentose sugar. For example, this. देखो ये वाला इस sugar के साथ binded है. Suppose at the third carbon, and the other hydroxyl group of the phosphate is bonded to Fifth. fifth carbon of the pentose sugar. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. Okay. Now, this sugar is also attached to purine or pyrimidine, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which forms the what of the DNA structure? Backbone. Backbone. No. Slider. What do they form? Steps. Steps Twisted of the ladder. DNA structure, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in short, you can remember the structure this way also. ये जो है, ये है backbone of the DNA strand, the sugar and the phosphate, and the pairing between the purines and pyrimidines with either double hydrogen bond or triple hydrogen bond is the steps of the DNA structure, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So students, I told you that thymine is always bonded to adenine with double hydrogen bond, and guanine is bonded to cytosine with triple hydrogen bond. So who discovered these hydrogen bonds between the purines and pyrimidines? 12th standard student, can you tell? Are you all there? Yes, miss. तो 12th स्टैंडर्ड में कोई मुझे बता सकता है ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के बीच में, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? अरे ये तुम्हारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी हो गया है, जेनेटिक्स भी तो कंप्लीट हो चुका होगा ऑलमोस्ट 12th के सिलेबस में. यू नीड टू लर्न स्टूडेंट्स, यू नीड टू इंक्रीज योर टाइम ऑफ स्टडी.
So it is discovered by the scientist Pauling. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. So students, DNA discover किसने किया? Friedrich Misch. Frederick Misch. Very good. Frederick Miescher. And what he named it as when he found it? Nuclein. 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 Very good. Who renamed it as nucleic acid? Richard Altman. Very good. Altman. Very good. Who discovered the two types of nucleic acids? Horsell and Levin. Levin. Very good. Then who discovered the double and triple hydrogen bonds between the nitrogen bases? Pauling. तो देखो एक डीएनए या एक न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ रहे हैं, बट सो मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन इज देयर बिहाइंड इट, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक और साइंटिस्ट जो बच्चा खुचा है वो चार्गफ. Who is that last one? Chargaff. You can call it as Chargaff or Chargaff, anyhow you want. जिस तरीके से याद रहता है उस तरीके से याद रखो. So ये जो चार्गफ साइंटिस्ट है, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड के केमिकल कॉम्पोजिशंस को और डिटेल में पढ़ा. देखो ऑलरेडी वी नो दैट द न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ शुगर, बेस एंड फॉस्फेट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने और डिटेल में ये केमिकल कॉम्पोजिशन का स्टडी किया. And he gave some rules of the nucleic acid structure. Whether it is DNA or it is RNA, Chargaff studied the chemical composition. Means Chargaff studied nitrogen bases, Chargaff studied sugar, and he studied phosphate. And he found something which he called Chargaff's rule. So the first rule given by the Chargaff after studying the chemical composition is purines are always equal to pyrimidines. Obviously, अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड पे प्यूरिन होता है तो अपोजिट स्ट्रैंड पे ऑब्वियसली कौन होता है? Pyrimidine. अगर एक स्ट्रैंड पे पायरिमिडिन होगा तो दूसरे स्ट्रैंड पे अपोजिट ऑब्वियसली कौन होगा? Purine. समझ में आ रहा है? कभी ऐसा होता है क्या डीएनए में कि एक ही तरफ पे नाइट्रोजन बेस है, दूसरी साइड पे है ही नहीं? No. So is this rule obvious that purines are always equal to pyrimidines? Yes, ma'am. Second rule, so वही उसने दिया है, A plus G is always equal to T plus C, right? Yes, ma'am. Purines is equal to pyrimidines. Okay. Third rule, the phosphate moieties are always equal to the sugar moieties, that is molecules. Obvious है ये भी. Phosphate sugar, phosphate sugar, phosphate sugar, phosphate sugar are the equal in number. Yes. Yes, ma'am. समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes. Ma'am. Yes. Now the next and the most interesting thing what he found. The ratio of A plus T upon C plus G. Like adenine is paired with thymine, cytosine is paired with guanine. तो ये जो base pair का, is it a base pair? Nitrogen bases का pair. Yes. Yes, ma'am. So the ratio of the base pair, lecture खत्म होने आए तो बोलो हाँ. The ratio of the base pair is always constant for a particular species. For example, human liver के DNAs, human liver के टिश्यू के सेल के DNAs के बेस पेयर्स का रेशियो निकाला. So it is a fixed amount. अब वो मुझे याद नहीं आ रहा, तुम लोग को लर्न करना है. For example, 1.96. I don't remember exactly. I'll send you the notes, उसमें देखो. Okay? तो ह्यूमन लिवर के टिश्यूज में जो सेल्स है, सेल्स में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो डीएनए है, एंड डीएनए पे जो बेस पेयर्स है, उसका अगर रेशियो निकाला तो इट विल बी ऑलवेज दिस. तो अगर हमें कोई फॉसिल मिलता है
उसके बॉडी पार्ट के टिश्यू के डीएनए के बेस पेयर का अगर हमने रेशो फाइंड आउट किया तो कैन यू आइडेंटिफाई द स्पीशीज? Yes. Yes, Yes. ma'am. So is it very important during paleontological studies? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, miss. And does it help to understand the evolutionary history between the different species? Yes. Yes, ma'am. Yes, miss. समझे? Yes. Yes, ma'am. अब स्टूडेंट्स बुक में ऐसे दिया है ह्यूमन लिवर टिश्यू का ये जो बेस पेयर का रेशियो सपोज 1.96, ई कोलाई बैक्टीरिया यू नो बैक्टीरिया टाइप ऑफ ई कोलाई उसके बेस पेयर का कुछ तो रेशियो दिया है सपोज इट इज x. One more word is given in the book, theta bacteriophage का सपोज बेस पेयर का रेशियो है, मतलब ये जो बेस पेयर का रेशियो है इट इज सपोज 1. आई एम अगेन टेलिंग, एंड में हम देखते हैं ये एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज आप लोगों को लर्न करनी. ओके, तो Yes, ma'am. बैक्टीरियोफेज मींस व्हाट? This virus which attacks Standard bacteria. students. What, Ashlesha? Virus attacking bacteria. Correct. See, virus infects plants, virus infects animals, virus also infects bacteria. So when a virus infects a bacteria, that type of virus is called bacteriophage. Phage means a virus infecting the bacteria, जिसके भी अलग-अलग टाइप है. जैसे ये है थीटा बैक्टीरियोफेज, there can be 81 बैक्टीरियोफेज, there can be 11. ये नंबर्स होते हैं अलग-अलग बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस के. समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So again I'm telling, मैं जो आज नोट्स भेजूंगी उसमें ह्यूमन लिवर का बेस पेयर का रेशियो दिया है, ई कोलाई का दिया है, बैक्टीरियोफेज का दिया है. You have to learn these numbers. Next lecture I'm going to ask you. Okay, miss. Okay? Yes. So did everyone understand Chargaff's rules? Yes. All the Yes, ma'am. structure of Yes. the DNA. Yes. Yes, ma'am. So any doubt till here? No. No, ma'am. No, ma'am. Now students will talk about occurrence of DNA. Just a sec. Before that, let me check all are present or not. No one will unmute for 1 minute. I'm taking presently to check how many are present. Okay, how much time is left for the meeting to go? Students will do one thing, will rejoin. तो क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो कंटिन्यू एक साथ ही होना चाहिए. So you'll understand it much better. Okay?